Okay, welcome students. Today is the second learning session of our chapter number 4 of Science 2, which is environmental management. Okay, so let us move ahead. So these are the topics we covered in the first learning session, right? We covered ecosystem. We only saw the definition of it, the definition of ecosystem. Then we saw types of consumers, so food chain and food. Okay. Today we are going to cover ecosystem. So it's a review of ecosystem. So we will deep dive into ecosystem. थोड़ा और detail में देखेंगे ecosystem. We're going to see trophic levels and we're going to see energy pyramid. Again, trophic levels, energy pyramid already done in 9th. It's just a revision. Okay, everything is repeated in 10th standard. These are words. First word is foliage. Second word is carcass. Third word is trophic, organic, and ecology. Okay. So in the review of ecosystem, these are the important. Okay, so first point we had already seen. Again, follow my red pointer. Okay, so where red pointer is, I am reading that. So ecosystem is formed by biotic and biotic. So yes, only we have seen, right? Biotic matlab kya? Biotic matlab living things, matlab non-living things, and their interactions. Interactions is about the word should understand and make it world. Okay, so interactions is important for ecosystem, not just the factor, but how they interact with each other is also important. Okay, so herbivores, again herbivores were seen yesterday. Herbivores में यानी क्या? Herbs खाते हैं. Herbs यानी क्या? Plants. Okay, so whichever animals eat plants, those are herbivores. Deer, goat, sheep, cat, horses, camels, eat producers. Producers यानी क्या? One the living things which can make its own food. अपना खुद का food कौन बनाता है? Plants, right? So herbivores, producers like plants. Predators यानी क्या? Predators are basically animals which will hunt other animals. Okay, so if you see example lion, tiger, these are going to hunt other animals. So predators like lion and tiger prevent population of herbivores. Okay, so एक forest था and that forest only deer. Okay, only there is no no if there is no tiger to eat the deers are increase number, right? उनको खाने वाला कोई. So the population deer is to increase a lot. Okay, so if it increases a lot, बहुत ज़्यादा बढ़िया, it is known as population. So predators like lion, tiger prevent overpopulation of herbivores. Prevent यानी overpopulate होने दिया. अगर deers बहुत ज़्यादा बढ़ तो lions बहुत ज़्यादा deers को मत खाएंगे उनको, right? So population control में रखता है predators. And this can found in nature or present filthy places. Places मतलब dirty places, जो कुछ भी गंदी जगह होती है, साफ सुथरा नहीं होता, बोलते filthy. So organisms present in filthy places, insects in dung. So if you see गाय का गोबर वगैरह के आज छोटे फ्लाइज ऐसे भाग रहे होते हैं, so those are insects, right? Insect presence in dung, उसके अंदर भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं. ये सब हम देखे बहुत बोलते हैं, they are useful because they are responsible for cleaning environment. Okay, so हमारे लिए अच्छा नहीं क्योंकि हमें गंदा लगता है, but environment के लिए those are important and useful because they are cleaning the environment. Okay, and the last point is our existence is dependent on these factors present around us. तो इनमें कुछ फैक्टर होगा, पूरा imbalance हो सकता है और हम इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड. ओके, we should take care of these factors. इनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. Okay, so that's review of ecosystem. Next is a think question. Okay, think on paper 25 to textbooks. If foliage in forest, foliage matlab it's one of the new words we learned, right? So foliage is basically a collection of leaves. So पत्तों का एक collection है. So if foliage in forest, dead trees जो मर गए, and carcass is a word. Carcass matlab it's an animal dead body. Okay, animal dead body is also called as carcass. So if foliage in forest, dead trees and carcasses in and around villages had not been destroyed. Yes. So we write जैसे insects, animals, trees मर जाते हैं, तो उनके माइक्रोऑर्गेनिज्म काम करते, बैक्टीरिया काम, फंगस काम करते हैं, कंपोस्ट करते हैं, ब्रेकिंग डाउन
स्मॉल बिटन पीस तोड़ के छोटे में कन्वर्ट देते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाता है। समझे नहीं हुआ, डिकोज नहीं होने वालों की क्या फर्क पड़ेगा? पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, ये तुम लोगों को क्या है, राइट डाउन, डोंट थिंक, क्वेश्चन इज थिंक, बट राइट डाउन योर सो आंसर लिखो। आई एम गिविंग 5 seconds to pause the video and write the answer. Okay, 5 seconds are done. You have already paused the video and now answers you can think. Okay, so these are answers I could think of. So point is, will not become fossil fuel and will roll. What is petrol? ये जो डेड होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, डिकम्पोज एंड दे उसके के लिए आते हैं बहुत सालों के फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। उसके अंदर जो कार्बन होता है वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को पेट्रोल यूज करते हैं और उससे नेचुरल गैस बनता है। सो अगर ये इतना डिकम्पोज ही नहीं हो, वैसे क्या वैसे रहा, तो हमको फॉसिल फ्यूल मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना डीजल मिलेगा, ना नेचुरल गैस मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कार्बन एयर, सो जो ट्री के डेड बॉडी है उस कार्बन है, उसको डीकम्पोज वापस सॉइल के अंदर चला जाता है, राइट? वो सॉइल के अंदर वापस जाता है तो सॉइल से एयर चला जाता है, वाटर में भी चला जाता है, तो कार्बन जगह पे सेट हो जाता है। हेंस प्लांट्स नॉट एबल टू कार्बन, सो क्योंकि सॉइल में भी नहीं है तो प्लांट्स जो सॉइल में से कार्बन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो भी सिली एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, एनिमल्स विल आल्सो, राइट, क्योंकि दे कार्बन प्लांट, तो to animals that come from plant. Ecology, okay, so ecology भी सब्जेक्ट का नाम है, जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इको इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, ओके, इट्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वहां पे उसमें क्या पढ़ते हैं वो लोग के लिए, रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड सराउंडिंग्स, ओके। अगर समझो ट्री उसके सराउंडिंग सॉइल है, रिवर है, सी है, तो उसका इंटरेक्शंस हो रहे हैं, क्या रिलेशंस है, और इकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जो लिविंग थिंग्स में जो बैलेंस है that be disturbed. Okay, so these are the two things I could think of when I thought about. Okay, let's move ahead. Again, call question, page number 36 on your. Okay, first question: which are the different trophic levels in food chain? 9th standard question. And what is energy pyramid? Again, 9th standard questions हम लोग ने बहुत बार टेस्ट में आंसर भी लिखे हैं इसके बारे में. Okay, so take 5 seconds, pause the video and take how much ever time you need. मैं 5 सेकंड रुकूंगा, तुम पॉज करके जितना समय लेना है लेके अपना लिखो। अगेन 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 16 बारे में एक्चुअली लिखो, जब लिखो फिर बाद में एक्चुअल से देखो, कैन कंपेयर योर आंसर, यू कैन चेक तुम लोग कितना याद है कितना याद नहीं है, पे करनी है। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर सेकंड्स। होप योर वीडियो हैव रिटन द आंसर्स ऑलरेडी, अभी याद आ रहा था। ओके, द आंसर फॉर दिस टॉपिक पिछले क्लास में देख रहे थे, कंज्यूमर्स होम जीरो प्रिवेंट लेवल। ट्रॉफिक क्या मतलब है? ट्रॉफिक मतलब ट्रॉफिक इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, मतलब क्या हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग जो खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स, राइट? मतलब रिलेटेड न्यूट्रिशन और कैसे प्रोड्यूसर्स विल मेक फूड, कंज्यूमर्स विल फूड फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर, खा रहे हैं, इसलिए इन लेवल ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन center. What is pyramid? Okay. So energy first and energy graphically at okay, हमें दिख रहा है एनर्जी से फ्लो, एक
ट्रॉपिक लेवल में. ओके, फर्स्ट पॉइंट. मूव फ्रॉम टू जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, एनर्जी इज गोइंग टू कीप डिक्रीजिंग एंड लास्ट एनर्जी ट्रांसफर्ड एनर्जी में रेस्ट ऑफ इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट. ओके, तुम लोग एक देखो राइट साइड देखो, लेवल और तुम के पास 10,000 किलो का एनर्जी यूनिट है. ओके, तो ग्रास के अंदर 10,000 किलो कैलोरीज एनर्जी है. सो ग्रास को कौन खाने, ग्रास खाने वाला, ग्रास खाएगा पूरा नहीं, उससे 1000 डिवाइडेड बाय 10. ओके, दैट मीनिंग ऑफ ओनली एनर्जी ट्रांसफर. यहाँ पे 10,000 का 10% निकालो, 1000 को 1000 की कैलोरीज लेंगे. सो 10,000 कैलोरीज मिलेंगे. फिर 10% स्नेक को सिर्फ की कैलोरीज मिलेगा जब स्नेक फ्रॉग को खाएगा. सो as we are moving from bottom to the topic level of energy pyramid, the energy to keep reducing. It सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा, बाकी 90% to be by the animal plant and it will be given out as heat. Okay, that's the second question. What is the energy pyramid? Okay, let's move ahead. Next on the same page they have given a question skill to are to discuss जीवो जीवस्य जीवनम. Hope I pronounced that correctly. जीवो जीवस्य जीवनम. Okay, I think it's Sanskrit. I'm not really sure. Okay, so I've written 3 points about it. First point is जीवन means one living being is food. अगर I'm a living being, I'll be food for someone else. ऐसे हर लिविंग के लिए फूड बन रहा है. Okay, so where do you see this? Primary consumer, right? Grass is eaten by grasshopper. Primary consumer eaten, grasshopper is being eaten by frog. And so the point है एक से लोग एक दूसरे खाते जाते हैं. हम लोग जीव से इनमें से कोई एक कंपोनेंट अभी तुम लोग पीछे भी देखोगे, समझो यहाँ फ्रॉग्स कर दिए तो पूरा नहीं होगा. तो ये यहाँ पे जो है में से कुछ भी में आ गया, बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो पूरा पूरा फूड चेन में डिस्टर्बेंस आ जाएगा. ओके, सो जस्ट रिमेंबर जीवन में one being is food for another. You can also use this as if you are okay in the devices. Okay, let's go ahead. Next, let's on page number 37 of your science 2 textbook. So the question, bird is building nest on a tree. I think written this question wrong. Problem लग रहा है. A bird nest on a tree feeds on the fishes. Feeds on, okay, this is not feed, but this is feeds. Let me try to cut it. Successful. Yes, on a tree feeds is in the nearby pond. अपना नेस्ट बना रहा है, बट वो खाना ले जा पॉन्ड है, वहां से फिशेस को खा रही है वो बर्ड. विद ऑफ बोथ सो बर्ड किस खाना खा रहे हैं वो में से, और नेस्ट कहाँ पे बना रहे हैं. सो व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द geographical area. से पहले बात दो डेफिनेशन. geographical area consisting of two things, factors or factors. Okay, and non interactions. तो interact कैसे करें वो important. So
5 to think about, so don't write this answer, just think about this. I'll wait for seconds. So क्वेश्चन है कि अगर बैटरी पे खाना कौन से खा रहे, सो सिस्टम का पार्ट, क्वेश्चन दोनों इकोसिस्टम का आंसर सिंपल यस. व्हाई? क्योंकि पॉन्ड में फिर है तो ये हो गया खाना खाने वाला एक इंटरेक्शन. द बर्ड इज ऑफ द इकोसिस्टम, द बर्ड इज आल्सो ऑन अपना घर भी है ट्री के अंदर, तो आपस इंटरेक्शन हो गया. बट पार्ट फैक्ट ट्री इज सॉरी नेस्ट इज दोनों में इंटरेक्शन हो गया नहीं. इट्स पार्ट इकोसिस्टम. तो ये बर्ड इन दिस केस पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. लेट्स मूव ऑन. ओके, प्लीज स्टार्ट अगेन. पॉज द वीडियो. तुम लोग चाहो तो टेक्स्ट बुक में इसको क्या और मेक दिस टेबल इन योर नोट. एंड यहां पे आंसर will be a lot of time for this 5 minutes, but I'm going to wait for 5 minutes. You all just pause the video, draw this book या फिर टेक्स्ट बुक में लिखो पेन से, then play the video again. Okay, so I'll wait for 5 for your video yourself. Okay, so I hope you तक already pause के आंसर लिखे जितना याद. Let us see the answers. Okay, put down answers. So first टेबल एक बार डिटेल में देखेंगे. So system, everything which comes under ecosystem, in know abiotic and factors we can even knowledge. So the first about factors in living factors, those are physical or chemical factors. Okay, physical factors like water, minerals, सब physical factors. So non-living physical factors. Next, chemical factors. Physical फैक्टर्स साथ हमेशा केमिकल फैक्टर्स आएगा. केमिकल फैक्टर्स में क्या आएगा इसमें न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स. न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल वी नीड विटामिन्स, वी नीड प्रोटीन. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स. सॉल्ट्स में our body has potassium, our body has calcium, all these are salt, right? इन सबके salts हमारे body में होते हैं. So chemical factors are okay. So chemical organisms हैं organic substances. So organic की वर्ड क्या है? So basically organic का मतलब जो anything related to living thing. So anything related to living thing is organic. Okay, related to proteins, carbohydrates, fat, all these are found in generally living things, right? So organic substances मतलब जो कुछ living things organic substances which don't generally find in our body. Okay, or which are not out of a living thing. जो कुछ भी non living thing के अंदर. Okay, there's simple hydrogen, calcium, iron, etc. So ये होगा हो गया. ये सिस्टम से बायोटिक कंपनी हम लोग ने ऑलरेडी बहुत डिटेल में सब कुछ. ओके, बायोटिक में ऑटोट्रॉकर हेटेरोट्रॉकर यानी खुद का खाना खुद बनाना से उस प्लांट्स होते हैं which are also plus. तो यहाँ नेक्स्ट हेटेरोट्रॉपिक यानी which cannot consumers causes. ये already seen lot of detail consumer second tertiary consumers होंगे. I'm not going to explain that in detail. Decomposers में again I had told you once living things die, these microorganisms, bacteria, fungi will all work on those dead bodies, carcasses, foliage, and they are going to decompose. Decompose यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना. Okay, so that's the work of decomposers. So we are also done with biotic components. So I hope तुम लोग ने अब तक सब कुछ pause करके note कर लिया. Okay, either in the textbook itself or in the notebook. Okay, let's move ahead.
Again, page number 37 में they have given you a let's think question. Again, it's a very interesting question and this is not as easy as it seems. Okay, तुम लोग काफी ध्यान से सुनना पड़ेगा, काफी ध्यान से सोचना पड़ेगा. You have to think critically to come up with the answers. Okay, काफी logically सोचना पड़ेगा और sequence में सोचना पड़ेगा. So I'll quickly read the question. Paddy is cultivated. Okay, paddy क्या है? Paddy is basically a crop. Okay, जैसे wheat होता है, जवार होता है, वैसे ही rice होता है, वैसे ही paddy होता है. Okay, so paddy is a crop cultivated on large scales in various states of South India. South India में बहुत बड़े स्केल पे पैडी को कल्टीवेट कर रहा है. पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रास हॉपर्स. सो ग्रास हॉपर्स हमें पता है वो ग्रास खाता है या फिर इट ईट्स क्रॉप्स. सो बहुत बार ये ग्रास हॉपर्स आके पैडी फील्ड को खा जाता है. Similarly, frogs are also present in large number in the mud of paddy fields. So, पैडी एक ऐसा क्रॉप है जिसको आजू बाजू बहुत पानी लगता है, बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता है. सो उस पानी में जनरली फ्रॉग्स भी बहुत बड़े नंबर में प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड फ्रॉग्स क्या खाते हैं? फ्रॉग्स आर गोइंग टू ईट ग्रास हॉपर्स एंड स्नेक्स आर आल्सो प्रेजेंट. उस जगह पे स्नेक्स भी होते हैं दैट फीड अपॉन देयर फेवरेट फूड फ्रॉग्स. तो स्नेक का फेवरेट फूड क्या है? फ्रॉग्स. सो पैडी फील्ड्स है, पैडी फील्ड्स को क्या खाने वाला है? ग्रास हॉपर्स. ग्रास हॉपर्स क्या खाने वाला है? फ्रॉग्स. फ्रॉग्स को क्या खाने वाला है? स्नेक. ओके, सो ये पूरा फूड चेन बन रहा है. However, if frog population declines all of a sudden, कुछ तो हो गया और एकदम जल्दी से फ्रॉग का जो नंबर है उस एरिया में एकदम जल्दी से कम हो गया, then what is going to happen? They have given you 3 questions. Read the questions carefully and think about them and again write the answers which you think in your notebook. Okay, पहले आंसर लिखो जो तुम लोग को लग रहा है क्या होगा. It's very logical question. Okay, I've already given you all the answer while reading the question itself. Okay, so pause the video, write the answers in your notebooks. I'm going to wait for 5 seconds for you all to pause. Okay, so I hope तुम लोग ने pause करके answers लिख दिए इस questions के. Okay, now we are going to see the answers. So first question, if frog population declines all of a sudden, what will be the effect of on paddy crop? So अगर frog एकदम कम हो गए, first point मैंने क्या लिखा है? Frogs eat grasshoppers, right? Frogs eat grasshoppers and grasshoppers eat paddy crops. So if frog population declines, अगर frogs जो grasshoppers को खाते हो कम हो गए, then grasshoppers population will increase, right? So grasshoppers eat frogs. नहीं, sorry, frogs eat grasshoppers. So frogs अचानक एकदम कम हो गए तो grasshopper को खाने वाला कोई नहीं है. So grasshopper का population बहुत increase होने वाला है. And what do grasshoppers eat? Grasshoppers eat the paddy, right? They eat the crops. So because grasshoppers का population increase हो गया, जो paddy crop है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि सब कुछ जो ग्रास हॉपर्स का नंबर बढ़ गया वो लोग ने खा लिया. ओके, क्विकली समराइज द फर्स्ट आंसर. फ्रॉग्स ईट ग्रास हॉपर्स ईट पैडी. सो अगर फ्रॉग्स एकदम अचानक कम हो गए तो जो ग्रास हॉपर्स को खाने वाला कोई नहीं है, सो इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है. इनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया तो पैडी को खाने वाले बहुत सारे ग्रास हॉपर्स है. सो पैडी विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज द इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रास हॉपर्स. सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. प्रोडक्शन ऑफ paddy crops will decrease. Next question, number of which consumers will decline and which will increase. कौन से consumers increase होंगे, कौन से consumers decrease होंगे. Okay, again very logical question. तुम लोग को बस ये पता होना चाहिए कौन से टाइप का कंज्यूमर का एग्जाम्पल क्या है. ओके, सो इफ द नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सो फ्रॉग्स कम होने वाले, राइट? फ्रॉग्स क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. then the number of primary consumers grasshoppers will increase. हमने ऑलरेडी देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि grasshoppers का पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाला है. सो grasshoppers कौन से कंज्यूमर्स है? प्राइमरी कंज्यूमर्स. सो द नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स इज गोइंग टू इंक्रीज एंड क्या कम होने वाला है? फ्रॉग को कौन खाता है? फ्रॉग को स्नेक्स खाते हैं. सो अभी फ्रॉग्स अचानक कम हो गए तो स्नेक्स को खाने के लिए कुछ नहीं है, सो स्नेक्स का भी पॉपुलेशन कम होगा. ओके, सो इसलिए मैंने लास्ट में क्या लिखा है? नंबर ऑफ टर्शरी कंज्यूमर्स. तो स्नेक्स क्या है? टर्शरी कंज्यूमर. ये तुम लोग को पता होना चाहिए. सो नंबर ऑफ टर्शरी कंज्यूमर्स व्हिच इज स्नेक्स विल डिक्रीज. दिस इज योर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन, what will be the overall effect on the ecosystem? अगर फ्रॉग का नंबर अचानक कम हो गया सो पूरे इकोसिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम होगा? सबसे पहली बात, वी हैव सीन पैडी क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड एंड नंबर्स ऑफ स्नेक्स विल आल्सो डिक्रीज. ओके, सो ये दोनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी. हेंस द फूड चेन विल बी डिस्टर्ब एंड देयर विल बी इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम. वी हैव सीन, राइट? वो फूड चेन में से कोई भी एक चीज अगर
एक चीज में प्रॉब्लम आ गया, the entire food chain is going to get disturbed. So there will be an imbalance in the ecosystem. That's your last answer. Okay, so let's move ahead. These are the words we learned today. Foliage we had seen. It's basically a collection of plant leaves. Carcass we had seen. Carcass मतलब animal का dead body. Trophic means it is something related to nutrition, या फिर हम लोग कैसे खा रहे हैं चीजों को, and how we are getting energy. Next, organic. Organic matlab something related to living matter, something which comes from living matter. Lastly, ecology we had seen. It's a branch of biology which studies relation between living things and its surroundings. So these are the words we have learned today. So that's it for today. I hope you all understood everything and you all wrote everything down. So yeah, that's it. See you guys. Bye.